Welcome to the chemistry lecture. Today we will discuss about the chemistry and the special theories some. So let's come to the point acid base theories. Now we have to discuss about the acid and base theory. Acid and base theory was proposed by 1887 by a Swedish scientist Arrhenius. Of the acid is a substance that dissociate in water to yield electrically charged atom. So let's discuss the background why theory was proposed. So in Texas, a US state in near the St. Antonic Bracken Cave is home to 20 to 40 million bats. In visitors, the cave must protect themselves from the dangerous level of ammonia in the cave. Ammonia is a byproduct of the bat's urine. You will learn why ammonia is considered as base. दोस्तों टेक्सास अमेरिका की स्टेट है और उसमें ब्रोकन केव जिसमें चमड़े जो है बैट्स उसे देखा गया और उसमें जो केव थी उसमें अमोनिया की जो प्रोडक्ट थी या अमोनिया था वो कुछ कदर ज़्यादा था क्योंकि वो उनकी यूरिन की प्रोडक्ट थी और उसके बाद ये अमोनिया को बेस का करार दे दिया गया। तो उसके बाद हमें देखते हैं कि उसे अमोनिया को बेस क्यों कहा गया। सो प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड एंड बेस। What are the properties on the what basis the acid and base was divided? So let's move towards the properties of the acid and base. Acid are taste and sour will change the color of the acid base indicator. They can be strong or weak electrolyte in aqueous solution. एसिड जो कि तीखे और खट्टे टेस्ट में होते हैं और जो लिटमस पेपर होता है एसिड का उसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं और ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं मगर वो कि एक्वस सॉल्यूशन में ज़रूरी हो कि वाटर सॉल्यूशन। उसके बाद आती है सिट्रिक एसिड कंटेन। सिट्रस फ्रूट जो भी है वो सिट्रिक एसिड कंटेन करते हैं और टी जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसमें टेनिक एसिड होता है। और उसके बाद आती है बेस क्या होते हैं। बेस टेस्ट बिटर फील स्लिपरी विल चेंज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी स्ट्रॉन्ग आर वीक इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन। बेसिड जो है वो तीखे और स्लिपरी होते हैं और इन जो इंडिकेटर होते हैं यानी कि लिटमस का पेपर उसको कलर चेंज कर देते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट वीक भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं मगर कंडीशन यही कि वो एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर सॉल्यूशन में ज़रूरी हो। एंटासिक एसिड uses bases to neutralize the excess stomach acid। एंटासिक एसिड जो है वो ह्यूमन स्टमक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में इस्तेमाल किया जाता है। द बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कंपोनेंट ऑफ द मोर्टार। ओके उसके बाद आता है आर्हेनियस एसिड बेस। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द आर्हेनियस फर्स्ट थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। आई ऑलरेडी इंट्रोड्यूस दैट आर्हेनियस proposed theory in 1887, a Swedish scientist Arrhenius. So how did Arrhenius define an acid and a base? Let's move the definitions. Arrhenius said that acid are hydrogen containing compound that ionize to yield hydrogen ion. Arrhenius ने कहा कि एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग होते हैं और आयोनाइज के बाद वो हाइड्रोजन आयन देते हैं एंड मगर कंडीशन क्या एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर में ज़रूरी हो। he also said that base are the compound that ionize to yield hydroxide ion in the aqueous solution और बेस वो होते हैं जो
हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। और इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर produce hydrogen ion and chloride ion. In HCl hydrochloride in aqueous solution water to produce hydronium ion and chloride ion. उसके बाद आता है Arrhenius acid, acid that contain one ionizable hydrogen which acid contain one ionizable hydrogen such as nitric acid is called monoprotic acid, or the acid that contain two ionizable hydrogen is called diprotic ion, and acid that contain three hydrogen ionizable and that called triprotic ion। और ट्राइप्रोटिक आयन का एग्जाम्पल है वो फास्फोरिक एसिड है, और डायप्रोटिक का सल्फ्यूरिक एसिड, और मोनोप्रोटिक का नाइट्रिक एसिड। उसके बाद ये एग्जाम्पल हैं सम कॉमन एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, इथेनोइक एसिड and carbonic acid. So here we are ending the lecture. We will move towards the another theory of acid and base. Now we will discuss the Arrhenius bases. Arrhenius bases, those are hydroxide ion in one of the product of the dissolution of the alkali metal in the water. Alkali mean they are nature in the bases nature. So sodium metal in dissociate in water to give sodium hydroxide and hydrogen molecule, as sodium hydroxide in dissociate in water in aqueous solution gives sodium ion and hydroxide ion. Some common bases are given below: the potassium hydroxide, sodium hydroxide, calcium hydroxide and magnesium hydroxide. The solubility in water, the potassium hydroxide and sodium hydroxide, they are high in solubility, and calcium and magnesium hydroxide, they are very low in solubility. So potassium hydroxide in aqueous solutions give the potassium ion and hydroxide ion. Milk of the magnesia is the base used for antacid and antacid. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि इस्तेमाल किया जाता है एंटासिड, और जो कि ह्यूमन स्टमक एसिडिटी को डिक्रीज़ करने में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है ब्रॉन्स्टेड-लोवर थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लोवर एसिड एंड बेस थ्योरी।